मार्केट काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता है। उनमें से एक है पीआई इंडस्ट्रीज, जहां पर Q4 के नंबर्स हमने देख लिए हैं। आय में करीब 11% तक का इजाफा देखने को मिला, 32% कंपनी का मुनाफा बढ़कर आया, इबिट्टा करीब 29% रहा, मार्जिन 3% बढ़े हैं, 25% के आसपास उभर कर आए हैं। लेकिन यहाँ से आगे स्पेशली एग्रोकेमिकल साइड पर कंसिडरिंग पिछला पूरा साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा था, क्या FY25 बेहतर साल उभर कर आएगा? इस पर बात करने के लिए कंपनी के वीसी और एमडी मयंक सिंघल जुड़ गए। मयंक का स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट आपके नंबर्स मैं क्लोजली पढ़ रही थी। ऐसे तो कोई बड़े कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन एग्री केमिकल साइड पर हमने देखा इट्स बीन अ लार्जली टफ ईयर आपके पियर्स के लिए भी। क्या स्थिति में अब कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है? हाँ जी, नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मेरे को इस प्रोग्राम पे इनवाइट करने का। अगर आप देखें तो पिछला साल जो निकला है उसके अंदर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री 1-1.5 साल से वेरी स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स रही हैं रिलेटिंग टू क्लाइमेटिकल सिचुएशन, डीस्टॉकिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस पोस्ट कोविड। इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए हमें जो दिखता है कि अगले साल के अंदर अभी इसको 1 साल और लगेगा और मेरे हिसाब से इस साल के अंदर थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग नॉर्मलाइज्ड जिसे कहते हैं। तो given that challenge, lot of destocking has already happened. On the other hand, lot of corrections are happening in the market at a global level, and I expect we will hopefully, if the seasons and climatical situation support, then in the next year we will see the trajectory correct for the agri industry overall. ओके, आपके केस में मैंने एक चीज नोटिस की है, डोमेस्टिक रेवेन्यू केम ऑफ अ लिटिल बिट, इट वाज डाउन नियरली 5% ईयर ऑन ईयर। इज इट प्राइमरीली क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम हल्का था इसीलिए ये देखने को मिला, और Q1 एंड स्पेशली फॉर पीआई इंडस्ट्रीज क्या वो वॉल्यूम में पिकअप के आसार बनते दिख रहे हैं? हाँ, वॉल्यूम को जहां तक देखें तो वॉल्यूम तो पिकअप करेगा, पर अगेन वॉल्यूम मे नॉट बी द राइट जजमेंट। पॉइंट इज दी न्यू प्रोडक्ट्स एंड डोसेजेस हैव टू बी सीन एज वन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि PI has in the agri business looking at the climatical situation, looking at the inventory, PI has always maintained efficiency. अगर आप देखेंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल is very drastically improved, thereby showing that the market efficiencies by which we operate is very high. So PI doesn't, so right now PI has got a very clean set compared to many in the market, and I expect if the season support and go, we will get into a very good positive growth situation in this business in the coming year. Okay, so then what is it that you're expecting for FY25 largely? What kind of growth are you expecting this year could bring for you? You see, given the base of the company, given where we are, I think we have already surpassed the global growth numbers as one of the fastest growing companies in the last year. And even looking at here, we already indicated around 15% overall organizational growth. And I'm looking at the order book situation, looking at what we see. If no major calamities at global level, we believe we can very well hold on to these numbers. Which is about 15% plus growth. Yeah. Okay. What about the pharma side, Mayank? How is that faring for you? As you know, this is an initial investment, and we're very much excited about this space. It's an initial investment that we made for building and by acquiring a few assets. And in order to implement the strategy, it takes time. It is not a quick turnaround situation where you can say, okay, fine, we did the road running. We have the next 3 to 4 years of strategic roadmap laid. We are investing. We right now building system processes, human capabilities, and I'm pretty confident 3 to 4 years we will start seeing some positive signs of a differentiated approach that PI has taken in the pharma business rolling up. Okay. I want to come back to your agrochemical side. Are you looking at launching a specific number of products for FY25? How much would they be? What kind of market share are you looking at these companies, these products can perhaps target? So अगर आप देखें तो we are looking about 6 से 7 प्रोडक्ट का लॉन्च प्लान है एग्रोकेमिकल के अंदर। उसके अंदर बायोलॉजिकल्स का हमारा फोकस है, and I think today in the biological segment we have grown well, living up, answering to our purpose of reimagining healthier planet by looking at new generation, safer, better chemicals and focusing on biologicals. We have grown biologicals last year by 30%, and we continue to invest to grow that. We believe that's the right way ahead.
On the other hand, we also bring in some new agrochemicals which could be differentiated in the market. Okay, now we've seen a lot of peers coming together, tying up, etc. क्या आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपने agrochemical business के लिए? Any JV with any peer? Sorry, I didn't correctly get that question. PI is a partnership business model. We've been working with more than 25 to 30 partners across. So we are tying up in what context, please? So like what UPL and Aarti are planning to do in the amine side, you know, products that perhaps are largely imported, they're trying to develop something in India. Are you looking at exploring any such partnerships? Yeah, PI has a very differentiated business model compared to that. Right. Number one, we are more on the innovator and knowledge side of the business, and we're looking at the technology side. And you would have seen in our investor closure, PI is the first Indian company to have put out a new agrochemical in the world. Right. With the name of Pioxinated Pro, first ISO name forever to be achieved by Indian company for bringing a new AI into global outlook. And that's where we will be forging partnerships globally to commercialize and take these products at a different level. So where does your order book stand at the end of FY24, and how much is it likely to grow for 25, Mayank? Well, I don't have the exact numbers on my hand, but I think there's about $1.7 billion. That's, I think, what we disclosed. So it's not on the top of my mind right now. And I think we continue to grow that because this is something that comes and goes out on a constant basis. I'm sure. So basically, FY25 is likely to be a better year compared to what 24 was? Why would I say that? I mean, I don't think 24 is bad for PI as a company. No, I'm not talking about PI. I'm talking about the whole industry. Yeah. The industry suffered a lot in 24. Yeah, I expect the industry to start showing certain positive colors. For the first half, the third quarter, things will move. Okay. Hopefully, if everything goes well in the climatical situation with the global warming challenges today, it's played an important role for this industry. Mayank Singhal, thank you very much. बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, इनफैक्ट नंबर्स बहुत अच्छे थे, जहां पर बाकी एग्रोकेमिकल कंपनियों ने काफ़ी थोड़ी सी वो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग के चलते परेशानी महसूस की है. पीआई के केस में वैसा नहीं था. अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली है. स्टॉक आपके सामने 3,636 के आसपास ट्रेड करता हुआ. पंकज, इसको ट्रैक करते हैं क्या पीआई इंडस्ट्रीज? जी हर्षदा जी, जब आपकी बात चल रही थी वही ट्रैक कर रहा था. देखिए मैम, 3600 रुपए की रेंज में एक जबरदस्त ओआई राइटिंग देखने मिली है वहां पे, और पुट साइड में है. मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एक बेस बना चुका है. 3610 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर अगर कोई बाय करना चाहे तो वो बाय कर सकते हैं. 3680 और 3710 3710 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं. काफी अट्रैक्टिव लग रहा है चार्ट्स के ऊपर. ओके, अट्रैक्टिव है